Jai Somnaran friends, welcome to our e-learning class of Gokuldham. Today we are going to learn the very first lesson of social science in Standard 9. The name of this lesson is here given, Rise of British Rule in India. Friends, we are all aware about the history of our country. Since ancient time, many people came in our country with the purpose of business and trading activity. Initially, they came with a business activity or trading activity, but gradually they had started expanded the empire and they had started also control our country. Friend, Portuguese people, French people, Dutch people, British people, all these people came in our country with the purpose of trading activity as well as business purpose. These people came in our country due to the attraction of our country's prosperity and glory. Because in ancient time, our country was known as a golden sparrow, and that's why they came in our country. These people came in our country with the purpose of business and trading activity, but gradually they had tried to establish their rule in our country. Now friends, we will discuss about these communities or these people who had started or who had tried to establish their rule in our country. For example, Portuguese people, Dutch people, French people, British people, all these people had tried to establish their rule in our country as well as they had started to expand their empire in our country. So we will learn today among these people which is the British people. So British people had tried to establish their rule in our country. So all these things we will see in this lesson. Now friends, we will see this lesson from the textbook. You have given the page of our textbook on your screen. So you can easily read it as well as you can easily learn it. So we will discuss this lesson line by line. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural, and religious inheritance. Means from ancient period, our country has enjoyed incomparable position in whole world in the terms of economic, cultural, and religious inheritance. So there was no any country in our world which compare to our country with इकोनॉमिकली कल्चरली एंड रिलीजियस, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री उस वक्त नहीं थी कि जो इकोनॉमिकली कल्चरली और रिलीजियस तरीके से इतनी डेवलप हो. ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. Means due to economic prosperity of our country, from different regions, from different provinces, people came in our country with a purpose of business and trading activity. यानी कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल इनहेरिटेंस इतनी पॉपुलर थी कि दुनिया में से अलग अलग कंट्री से लोग हमारी कंट्री में आते थे. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. So at that time, all these things were in great demand in European nations. यानी कि ये जो चीज़ है जैसे कि इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, तो ये सब की जो डिमांड है वो डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा थी. Trade between India and Europe was carried out
through land route and sea route, and at the center of these routes was Istanbul, means Constantinople in Turkey. But to done this trading activity between India and Europe, there was a prime center which was Istanbul, which also known as Constantinople in Turkey. So that was the prime center in ancient period for the trading activity between India and Europe. यानी कि इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए तुर्की का जो इस्तांबुल है वो एक प्राइम सेंटर था, एक मेजर सेंटर था कि जहाँ से जो लैंड रूट है वो लैंड रूट और सी रूट जो है तो वो वहाँ से ट्रेडिंग एक्टिविटी पॉसिबल हो सकती थी. नाउ वी विल सी सेकंड पैराग्राफ. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, means Istanbul, was closed for the Europeans. So friends, here given, in 1453 AD, Turkish Muslims were closed or blocked this Istanbul after victory over European people. And this route, this center was banned or blocked completely. यानी कि 1453 में तुर्किश मुस्लिम ने ये जो एरिया है, ये जो इस्तांबुल है, उसको जीत लिया और उसके बाद हमेशा के लिए ये जो सिटी है वो सिटी को ब्लॉक कर दिया. Since they could not do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route. So, an era of geographical discoveries began. Friends, here we can see the Istanbul was a prime center to done the trading activity. But Turkish Muslim had captured this region, and that's why the European people had necessary to found a new sea route or to found a new land route. यानी कि जब तुर्किश मुस्लिम ने ये एरिया यानी कि इस्तांबुल को जब कैप्चर कर दिया तो यूरोपियन पीपल के लिए अब कोई और रास्ता बचा हुआ नहीं था और उनको इंडियन स्पाइसेस की बहुत ही ज़रूरत थी और उसके कारण उनको इंडिया की तरफ आने के लिए एक अलग से नया रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी. So, an era of geographical discoveries began, and in this way, the geographical discoveries had started in the world. और इस तरह से एक geographical discoveries शुरू हुई कि जिसके जरिए हम यूरोपियन पीपल इंडिया में आ सकें. Now, friends, we will see here discovery of sea route to India. With the inspiration, encouragement, and economic help from Portuguese King Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route. That means with the inspiration, encouragement and economic help from Portuguese King Prince Henry, many brave people had started efforts to discover a new sea route for India. यानी कि पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी के इंस्पिरेशन से, उनकी एनकरेजमेंट से और इकोनॉमिक हेल्प से कई ऐसे पोर्टुगीज पीपल थे कि जिन्होंने इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढने की शुरुआत की थी, यानी कि उन्होंने एक एफर्ट शुरू किया था. मैनी ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोमेव डायज, who discovered the Cape of Good Hope. So, among this discovered, many people had started this activity, and among these people, Bartholomew Diaz, who was a great sailor, and he has discovered Cape of Good Hope. यानी कि जो पोर्टुगीज के जो किंग थे प्रिंस हेनरी के एनकरेजमेंट से जो एक पर्सन थे, एक सेलर थे जो बार्थोलोमेव डायज, तो उन्होंने कैप ऑफ गुड होप की ढूंढी थी. विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन क्रिस्टोफर कोलंबस बिगेन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट, विच अगेन केम टू अ स्टॉप
at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. So in Portugal, Prince Henry had encouraged to their people. In the same way, in Spain, in the same way, in Spain, King had encouraged to their people, and as a result of Christopher Columbus had begun their adventure to discover a new sea route for India, and he had found some islands in the world, and these islands nowadays known as West Indies in Atlantic ओशन. यानी कि जैसे प्रिंस हेनरी ने सबको एनकरेज किया था, इंस्पायर किया था, और इस तरह से जो बार्थोलोमेव डायज है तो उन्होंने एक नया सी रूट ढूंढने की शुरुआत की थी और उन्होंने कैप ऑफ गुड होप की ढूंढी थी. उसी तरह स्पेन में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ये अपने लोगों को इंस्पायर किया था, एनकरेज किया था, और उसके कारण क्रिस्टोफर कोलंबस तो उन्होंने ये जो एक नए आइलैंड थे वो आइलैंड ढूंढे थे और वो आज वेस्टर्न के नाम से जाने जाते हैं कि जो अभी अटलांटिक ओशन में है. कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ that he had discovered a new sea route to India had actually discovered a new land. So throughout his life, Columbus believed that he had found a new sea route to India, but actually he had found a new लैंड. यानी कि कोलंबस जो थे तो कोलंबस ने अपनी पूरी लाइफ में यही माना था कि उन्होंने एक इंडिया की तरफ आने के लिए एक नया सी रूट जो है वो नया सी रूट ढूंढ लिया है, मगर एक्चुअल में वास्तव में वो इंडिया का सी रूट नहीं था, वो एक नया आइलैंड ही था. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. So in this way, this clarification was given by Amerigo Vespucci, and after that, this land is known as nowadays America. यानी कि कोलंबस ने जो लैंड ढूंढी थी या फिर जो लैंड उन्होंने खोज की थी तो वो एक्चुअल में वो एक आइलैंड्स थे कि जो अटलांटिक ओशन में आए हुए थे, वो इंडिया नहीं था. और ये क्लैरिफिकेशन किसने दी थी तो अमेरिको वेस्पुची ने दी थी, और अमेरिको वेस्पुची के नाम से ही फिर ये आइलैंड का नेम भी रखा गया अमेरिका. नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर द मैप ऑफ द रूट्स which were very useful in ancient time to come in our country. यानी कि यहाँ पे जो एक मैप दिया है तो वो मैप इंडिया के में आने के लिए कौन से सी रूट यूज होते थे, कौन से लैंड रूट यूज होते थे, तो वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है. Many people were tried to discover a new sea route or land route to India. So we will see here the next paragraph. The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. When he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the then King Zamorin and allowed to carry out business there. That means one of the Portuguese sailor whose name was Vasco da Gama, he had attempted success, and he had discovered a new sea route to India in 1498 AD. यानी कि जो भी सेलर्स थे वो हर एक सेलर्स इंडिया के लिए नए सी रूट को ढूंढने में अपना एफर्ट करते थे, और उसमें से जिसको कामयाबी मिली, जिसको सक्सेस मिली, तो वो थे वास्को द गामा के जिसका जो पोर्टुगल से बिलोंग करते थे, और उन्होंने कब इंडिया के लिए नया सी रूट ढूंढा तो वो 1498 में. When he reached in India, so he reached first of all in Calicut in western coast of India. यानी कि जब वो इंडिया में आए तो सबसे पहले वो इंडिया के कौन से पार्ट में आए तो वेस्टर्न कोस्ट में जो कालीकट है तो कालीकट में सबसे पहले आए थे. एट दैट टाइम देयर वाज अ रूल ऑफ किंग जामोरिन. ही हैड अलाउड टू स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटी. यानी कि उस वक्त वेस्टर्न कोस्ट में कालीकट में
जिसका रूल था, तो वो कौन से किंग थे, तो किंग जामोरिन थे। और उन्होंने पोर्टुगल्स के जो सेलर थे वास्को द गामा, तो उन्होंने उनको परमिशन दी थी कि वो इंडिया में आके वो बिजनेस कर सके। Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for other Europeans to come to India. So, this thing is considered as an important event in Indian history. Why? Because the doors of India was open for यूरोपियन पीपल इन आवर कंट्री। और इस तरह से ये जो इवेंट थी, तो वो इवेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी तरह से इंडिया में यूरोपियन पीपल को बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटी थी, परमिशन थी, वो सब यहाँ पे मिल गई थी और बिजनेस करने का जो दरवाजा था, तो वो उन्होंने खोल दिया था। नाउ फ्रेंड, वी विल सी द नेक्स्ट पेज, मीन्स पेज नंबर 4. There is given title Arrival of Europeans to India, means arrival of the British and establishment of trade centers. The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India. So, friend, here this is the most important point or sentence. Portuguese were the first people who came in our country आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट इन इंडिया। यानी कि फ्रेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य है, सेंटेंस है कि हमारी कंट्री में सी रूट से सबसे पहले आने वाले जो पीपल थे, वो पीपल पोर्टुगीज थे। विद इन स्पैन ऑफ 100 years, द पोर्टुगीज टूक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का, etc. So friends, within a short period, means within 100 years, they had captured several important territories of our country, and these territories is like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. यानी कि सिर्फ 100 years के पीरियड में ही, 100 साल के अंदर ही पोर्टुगीज पीपल ने हमारी कितनी ऐसे टेरिटरीज थी, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कोचिन, मलाक्का, उनको कैप्चर कर दिया था। इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड, द डच फ्रॉम हॉलैंड एंड द डेनिश फ्रॉम डेनमार्क अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड। सो पोर्टुगीज पीपल हैड सक्सेस to start success. He had got success to start the business in our country. He had also success to capture our country's some provinces. But another people were also inspired by Portuguese people, and these people were given here Dutch, which were belong from Holland, then Danish, which were belong from Denmark. यानी कि ये जो people थे, डच के जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे और डेनिश के जो डेनमार्क से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भी ये ट्रेडिंग एक्टिविटी इंडिया में शुरू करने का एफर्ट किया था। द इंग्लिश ट्रेडर्स established the East India Company to carry out trade with India. So friends, English traders had also tried to establish their business in our country, and that's why they had established East India Company to carry out business in our country. यानी कि जैसे पोर्टुगीज पीपल, डच पीपल, डेनिश पीपल ने जैसे एफोर्ड किया था, तो उसी तरह इंग्लिश पीपल ने भी ये एफोर्ड किया था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश की थी। और वो इसलिए एस्टेब्लिश की थी तो वो लोग इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते थे। इन 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. So friend, this is the most important line, so make bracket because this is the most important line. So in 1600 AD, यानी कि 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड के ट्रेडर्स को परमिशन दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी कि वो इंडिया में आके बिजनेस कर सके। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस
was reached with their ship in our country. यानी कि इस तरह से जब क्वीन एलिजाबेथ ने ये परमिशन जब दी तो उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप के अंडर में उनकी जो फर्स्ट शिप थी तो वो सूरत में आ पहुंची थी. Next, but due to the dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But at that time, the strong opposition and dominance of Portuguese people, they were not allowed their trade in this region. यानी कि उस वक्त पोर्टुगीज पीपल का जो डोमिनेंस था, उनकी जो ऑपोजिशन के कारण उनको ये परमिशन थी वो परमिशन नहीं मिल पाई थी. बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर एंड thus the British East India Company established its first trade center means Koti in Surat in 1613 AD. So Portuguese people had not allowed to British people to establish their center in India, and that's why he had went ahead and he had taken permission from Mughal Emperor Jahangir, and he had taken permission through this emperor, and in this way he had started first ट्रेड सेंटर इन सूरत इन 1613 AD. यानी कि पोर्टुगीज पीपल ने उनको ब्रिटिश पीपल को इंग्लिश पीपल का बहुत ही अपोज किया था, और इसके कारण वो ठीक तरह से वो वहाँ पे अपनी जो ट्रेडिंग सेंटर थी तो वो ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे. तो इसके कारण उन्होंने जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, तो मुगल एम्परर जहांगीर की ब्रिटिश पीपल ने यानी कि इंग्लिश पीपल ने परमिशन ली, और परमिशन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली थी, वो 1613 में मिली थी और वो सूरत में मिली थी. Initially, the company established its trade centers in Surat, Bharuch and Ahmedabad. Means initially they had established their trading center in Surat, Bharuch and Ahmedabad. यानी कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए थे तो वो ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश सबसे पहले सूरत में किए थे, उसके बाद भरूच में किए थे और उसके बाद अहमदाबाद में किए थे. तो ये फ्रेंड सेंटर्स थे कि जहाँ पे ब्रिटिश पीपल ने हमारे इंडिया में ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू की थी, तो वो सेंटर के ये 3 नेम थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है. बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east directions, where they set up their centers in Machilipatnam, which is located in Andhra Pradesh, St. George, which is located in Chennai, and Fort William, which is located in Kolkata. But friend, due to the strong presence of Maratha people, company were realized that the existence of these people were in danger. यानी कि मराठा जो थे तो मराठा पीपल के प्रेजेंस के कारण, उनकी हाजिरी के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना जो एग्जिस्टेंस था वो एग्जिस्टेंस खतरे में दिख रहा था. दैट्स व्हाई ही हैड मूव टुवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन. यानी कि इसके कारण वो साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़े थे, और उन्होंने जो अपने ट्रेडिंग सेंटर शुरू किए थे तो वो मछलीपट्टनम के जो आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज के जो चेन्नई में है, एंड फोर्ट विलियम के जो कोलकाता में है. सो फ्रेंड, दे हैड स्टार्टेड their trading center in this region in west as well as in east direction. Mumbai became their headquarters in 1687 AD. So in this way, Mumbai became their headquarters, means prime center for the trading activity in 1687 AD. यानी कि फ्रेंड उस वक्त ब्रिटिश पीपल का जो हेडक्वार्टर बना हुआ था ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, तो वो था मुंबई के जो
1687 में वो ट्रेडिंग सेंटर बना हुआ था कि जो उस वक्त एक हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया for trade in 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry, which is nowadays known as Puducherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. Friends, British East India Company was established in 1600 AD by British government or British Emperor. Same way, French East India Company was also established and they had started business in 1668 in our country. तो जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी तो सेम वे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी एस्टेब्लिश हुई थी, और वो कब से हुई थी तो 1668 में। तो फ्रेंड ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको ब्रैकेट करके रखिए। In the initially, the French East India Company had started capture the regions at like Mahe, Karaikal, Pondicherry means Puducherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. यानी कि ये जो ट्रेड सेंटर्स थे तो वो सेंटर्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में होते थे। In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. So in the 18th century, there were two people, English people as well as French people, and they were continuously started to establish their rule throughout the country in entire world. यानी कि 18th century में इंग्लिश पीपल और फ्रेंच पीपल के बीच में एक कंपटीशन हुई थी, कंपटीशन शुरू हो गई थी कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन कितने टेरिटरीज पे वो अपना जो रूल है वो रूल एस्टेब्लिश कर सके। बिटवीन 1746 and 1763 there were 3 Karnataka wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company. So between 1746 and 1763 there were fought 3 Karnataka wars, यानी कि 1746 से 46 and 1763 में 3 कर्नाटका वॉर शुरू हुए थे, और ये तीनों वॉर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इस वॉर में जो हार हुई थी तो वो हार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। एंड इन दिस वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was success to establish their rule in the most of region of the world। और इस तरह से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर एरियाज में, ज़्यादातर विस्तार में अपना जो रूल है वो रूल एस्टेब्लिश करने में उसको सक्सेस मिली थी। Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karaikal, and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. So in this way, with the battle of power for power, Portuguese were left from Diu, Daman and Goa। यानी कि ब्रिटिश पीपल के पास जो बैटल का पावर था, उनके पास जो आर्मी का जो पावर था, वो आर्मी के पावर के कारण वो ज़्यादातर इलाके में, ज़्यादातर एरियाज में अपने जो रूल है वो रूल एस्टेब्लिश कर सके, और उसके कारण पोर्टुगीज़ के जो जिसको दीव दमन जो गोवा है तो वो छोड़ देना पड़ा। वाइल फ्रेंच हैड देयर ट्रेड सेंटर्स एट चंद्रनगर, माहे, कैरेकल एंड पौंडीचेरी, और जबकि फ्रेंच है तो फ्रेंच को सिर्फ चंद्रनगर, माहे, कैरेकल और पौंडीचेरी ही मिला हुआ है। मीनवाइल द डच हैड टू लिव फॉरएवर, और उसी वक्त जो डच पीपल है तो डच पीपल हमेशा के लिए हमारी कंट्री को छोड़ के चले गए थे। सो फ्रेंड, टुडे वी हैव सीन हियर द introduction part of our first unit. Now friends, we will see here the map which is given on the page number 4.
The map is given here where European colonies were established by European people. So in this map we can see their map of India. So those areas which has indicated by pink star. So these areas were captured by Portuguese people. That means in these regions Portuguese people had established their colonies as like Diu, Daman, and in the south Goa, Calicut and Kochi. Now friends, you can also see their purple color triangle, and this symbol is indicate French colonies, and these colonies were established in Mahe, Karaikal, Puducherry. Now friend, we will see their blue color circle, and this symbol indicates the colonies of British people, and these colonies were established in our Gujarat and particular in Surat, in Maharashtra, in Mumbai and in Chennai. So these regions or colonies were established by British people. So here given friends the colonies where British people, French people and Portuguese people were established in our country in the 17th or 18th century. In the next video, we will see their Battle of Plassey and Battle of Buxar. So, thank you.